Hello students, in this session we are starting with the new chapter reproduction in lower and higher plants. So what is reproduction here? Reproduction क्या है? Reproduction means ability to procreate, अपने ही जैसा नया organism बनाना. So we can define it as it is a process in which an organism produce young ones similar to itself. ये ऐसा process है जहाँ पर कि organism अपने ही जैसे नए organism बनाते हैं जिन्हें कि offspring बोलते हैं. इट इज़ वेरी एसेंशियल प्रोसेस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एसेंशियल प्रोसेस है, एज इट इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ जनरेशन आफ्टर जनरेशन. सो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो स्पीशीज़ कंटिन्यू हो रही है नेचर में, दैट इज़ ड्यू टू रिप्रोडक्शन. ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स ओन मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन. हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक अलग मैथड है रिप्रोडक्शन का. एंड दीज ऑल मैथड्स फॉल इन टू कैटेगरीज. ये सारे मैथड टू कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. वी कैन से इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, दैट इज़ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, बर्थ से नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड है ऑर्गेनिज्म का, दैट इज़ कॉल्ड एज लाइफ स्पन. उसे हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पन. नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल except unicellular organisms. What is here? Immortal means what? Immortal means like living forever. No individual is living forever. Yes, so that is what immortal means, which never die. So except unicellular organism, as there is no natural death in unicellular organism. Now let's see the difference between asexual and sexual reproduction. Asexual reproduction, here single parent is involved. Here only one parent, we can say uniparental. Whereas sexual reproduction, two parents are involved, where one male and one female parent. The second point, no formation and fusion of gamete. Asexual reproduction में गैमीट का फॉर्मेशन या फ्यूजन नहीं होता है, वेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट. गैमीट फॉर्म होंगे एंड देन फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमीट एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हियर इट इन्वॉल्व्स माइटोटिक डिवीजन. सो व्हाट इज माइटोटिक डिवीजन? माइटोटिक डिवीजन, आफ्टर दैट हियर सोमैटिक सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन asexual reproduction, whereas sexual reproduction, it involves meiotic division. So by meiosis, here gametes, haploid gametes or germ cells are going to produce, and which will then further these male gametes or female gametes will produce, and then fusion between them. Next is individuals are genetically identical. Yes, the offspring which are genetically identical to their parents, जो बिल्कुल अपने genetically parents के जैसे दिखाई देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं clones. Whereas in sexual reproduction, individuals shows variations. Individuals में difference दिखाई देता है. They are not totally identical, but we can say थोड़ा similar दिखते हैं, but totally identical नहीं दिखते हैं. So they are called as offsprings, which shows variations. Now let's see the lifespan of some organism. What is lifespan here? Period from birth to death. So organisms and their lifespans are mentioned here. Like rose, 5 to 7 years. Rice plant, 3 to 7 months. Banyan tree, 400 plus years. Banana tree, 2 to 3 years. Then dog, 22 years. Butterfly, 1 to 2 weeks. Then fruit fly, 2 weeks. Parrot 140 years, crocodile 60 years, horse 40 to 50 years, tortoise 100 to 150 years, crow 15 years, cow 22 years, elephant 50 to 70 years. So likewise here many more organisms and their lifespans are always different. Now first we will discuss about asexual reproduction, and then after that we will discuss about sexual. So let's see asexual reproduction. As asexual reproduction, it is the production of offspring by a single parent. यहाँ पे जो offspring produce हो रहा है वो single parent से produce हो रहा है, and it is seen in unicellular organisms, simple plants and animals. ये unicellular organisms में simple plants and simple animals में दिखाई देता है. The offsprings are identical to one another and to their parents.
तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग हैं नेक्स्ट जनरेशन के वो अपने पेरेंट्स के जैसे दिखाई देते हैं या आपस में एक दूसरे के आइडेंटिकल दिखाई देते हैं. सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड एज क्लोन्स. सो ऐसे जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली जो सिमिलर इंडिविजुअल्स हैं उन्हें हम क्लोन्स बोलते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन are of different types like fission, budding, vegetative propagation. Fission again of two types, that is binary or multiple fission. Now let's discuss one by one. So asexual reproduction, here first is fission. So what is fission here? In this the parent cell divides into two or more individual. यहाँ पे parent cell divide होता है two या उससे ज़्यादा individual में, इसे हम बोलते हैं fission. Now fission is of two types. Example if we'll see in Protista and Monerans. So it is of two types, binary fission and multifold fission. Binary fission में क्या होता है? See, this is the example of binary fission where one cell divide into two. यहाँ पे parent cell divide होता है into two individuals. This is the parent and it is divided into two individual into two daughter cell. For example, amoeba and paramecium. Whereas what is multiple fission? Multiple fission is the division of parent cell into many individual. Parent cell divide होता है कई individuals में, more than two. That is multiple fission. For example, plasmodium and amoeba. Here you can see multiple fission in paramecium and here multiple fission in amoeba, that is uncystic amoeba. Now next is budding. So what is budding? In this a bud appears and grows in the parent body. So parent body के ऊपर ऐसा bud grow होता है and then after maturation under favorable condition this bud is going to detach from the parent body to form new individual. तो पहले तो parent body से ये bud attach होता है, फिर develop होता है, it appears there and then it grow on the parent body and then it matures on the parent body and जैसे ही favorable condition आता है कि parent body से detach हो जाता है and develop as a new individual. For example, hydra, sponge, yeast, etc. You can see here in hydra also the same way, here bud is there and ये maturation के बाद favorable condition में parent body से detach हो जाएगा और new hydra बन जाएगा. Now next is fragmentation. So what is fragmentation here? In this the plant body break into distinct pieces or fragments. Plant का body है, suppose this is hydra, the plant body breaks into different pieces. You can see यहाँ पे one or two pieces में break हो गया and then each piece will develop into new hydra. So this is what about the fragmentation. Each fragment grow into an adult capable of producing offspring. Here the same way fragmentation you can see in planaria break into three pieces and each develop into new planaria. So this is about the fragmentation. एक ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा पार्ट में ब्रेक होता है और हर एक पार्ट नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है. ये fragmentation in Spirogyra. So organism with filamentous body, they break into two or more fragments and each filaments grow into a new individual. So when water and nutrients are available to this Spirogyra, it grows and multiply rapidly by fragmentation. जो Spirogyra को water and nutrient मिलेगा, then what will happen? It will grow and multiply होगा and then this algae, this Spirogyra break into two or more fragments. एक से ज़्यादा fragments में break हो जाएगा and then these fragments और these pieces will grow into new individual. और ये fragments new individual में grow होंगे and then when they will mature, they are going to break into pieces and then again each will develop into new individual. Then this process continue and they cover a large area in short period of time. बहुत ही short period में they are covering large area. Now next is spore formation. So here
reproduces by forming spores. Under favorable condition, this spore develops into new individual. For example, like fern, fungi, bacteria, chlamydomonas and all. So in this method, here structures called as sporangia, they produce tiny cell called as spores, and when these spores comes in contact with the moist soil, it develops into new individual. So here you can see this is sporangiophore. On this sporangiophore, here sporangium is there, and under favorable condition this sporangium dehisced, burst. ये sporangium क्या होगा, burst हो जाएगा, split हो जाएगा, और इसके अंदर से ये जो spores हैं it will come out, and then when they will fall on the surface, then germination will start, and then it develops into new individual. So this is what spore formation. Other asexual reproductive structures like zoospores, conidia, gymmules, see different reproductive structures हैं. Now asexual reproduction is common method in simple organisms like algae and fungi, and during adverse condition they shift to sexual method also. Adverse condition में इनमें sexual reproduction भी होता है. Now higher plants reproduce asexually, that is vegetative and sexually, but most of the animals they show only sexual reproduction. Let's see about how zoospores, conidia and gymmule formation takes place. So zoospore formation में क्या होगा, यहाँ पर reproduces by spores, they are reproducing by spores, and under favorable condition these spores develop into new individual. favorable condition में जो spores हैं ये develop हो जाएंगे किस में, new individual में. For example, fern, fungi, bacteria and chlamydomonas. So these zoospores are what, motile. This you can see, this is zoosporangium where these spores are there. So these spores are, you can see flagella is there, so they are motile and flagellated cell. Motile means what, which can move. Flagella helps them to swim in aquatic habitat for प्रॉपर डिस्पर्सल. फ्लैजिला जो है इनको प्रॉपर डिस्पर्सल के लिए, मूवमेंट के लिए, स्विम करने के लिए एक्वेटिक हैबिटेट में हेल्प करते हैं. दीज जूस्पोर्स आर नेकेड विदाउट सेल वॉल. ये जो जूस्पोर्स हैं इनमें सेल वॉल इज एब्सेंट इन देम, सो दे आर नेकेड विदाउट सेल वॉल. कोनिडिया फॉर्मेशन. सो कोनिडिया क्या है, ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस होने वाले नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं. दे आर एसेक्सुअली प्रोड्यूस नॉन मोटाइल स्पोर्स. नॉन मोटाइल मीन्स विच कैन नॉट मूव, that are born externally to the cells that produce them. जो cells इन्हें produce करते हैं उनके ऊपर externally, बाहर से ही उनके ऊपर born होते हैं. For example, in Penicillium and other Ascomycetes, conidia are formed. Conidia produce at the tip of conidiophore. Conidia conidiophore के tip पर present होता है and multiplies repeatedly by this method during growing season. Growing season में repeatedly क्या होते हैं, ये multiply होते हैं. Then this conidia they produce singly or in chain at the tip of special hyphal branches called as conidiophore. Conidiophore के ऊपर ये conidia produce होते हैं, sometimes single, एक या एक से ज़्यादा chain के form में ये produce होते हैं. And then under favorable condition it gets separated from the conidiophore and develop into new individual. favorable condition में ये conidiophore से अलग हो जाते हैं और नए individual में grow हो जाते हैं. Next is gymmule formation in sponges. You can see an asexually produced mass of cell which are capable of developing into new individual or into an adult freshwater sponge that is termed as gymmule. Under favorable condition में ये जो gymmules हैं ये new organism में या freshwater sponges में develop हो जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं gymmules. So they are small bud-like cells which are formed by sponges to withstand under favorable environment condition. Gymmule क्या है? It is a type of internal bud formed in sponges. Internal bud है जो कि sponges में form होता है under favorable season.
So these are small spores like structure formed during unfavorable condition in fresh water. Fresh water में ये unfavorable condition में produce होते हैं, as well as in marine water also. So these are what the sponges which are formed where under favorable condition in fresh water as well as in marine water in the form of mass of cell, and that is what the sponges, or we can say gemule. Now let's see asexual reproduction. The other method of asexual reproduction is what? Vegetative propagation. So what is vegetative propagation? When the reproduction takes place by means of vegetative part of the plant. जब plant के ही किसी part से नया plant grow होता है तो उसे हम बोलते हैं vegetative propagation. So it is the production of offspring from vegetative propagules of the plant, like from the root, from the leaf, from the bud, from the stem. किसी भी एक part से नया plant grow होना, like bud, rhizome, adventitious bud, bulbils, offset, runners. So these are the examples. Like bird's eyes we had seen in potato tubers. Yes, and these, if we'll cut the pieces of the potato के अगर छोटे छोटे pieces करके हम soil में डालेंगे तो from this bud only the new plants will grow. Then rhizomes of ginger and banana, they also can grow into new plant. Then adventitious buds of bryophyllum, you can see this is what the bryophyllum leaf, adventitious buds, and when they will get moist soil, moist surface, they can develop into new plants. Bulbils of agave and offset of water hyacinth or runner, sucker. So these can easily develop into new plants by the vegetative part of the plant. Now let's see the potato tubers. So tubers modified plant structure that are enlarged to store nutrients. Yes, and these are short, thickened and underground stem. They are underground stem and it bears multiple scaly leaves. इन पे multiple scaly leaves present है with the bud and it has the ability to develop into new plant. अगर इसको ही हम soil में डाल देते हैं यहाँ से कट करके तो it have ability to develop into new plant. Example potato. You can see rhizome. It is the modified underground stem. ये क्या underground stem है? So rhizome is separated into pieces and each piece may be able to give rise into new plant. अगर इसको pieces में separate करके soil में डालेंगे, each piece can develop into new plant. Example ginger, canna. Now you can see bulbs. A bulb is a short stem with fleshy leaf or leaf bases like onion, garlic. If we'll put small clove in the soil, it can develop into new plant. Next is runner or stolon. It is a slender stem that grow horizontally to the ground. Slender stem है जो कि horizontally ज़मीन की surface को touch करते हुए grow होते हैं. Naturally it cuts off or separated. Then it develops into, each separated part will develop into new individual like strawberries. There are also few methods which would not occur naturally in the plants. ऐसे भी कुछ methods हैं जो कि plants में naturally नहीं होते. तो these are the artificial methods which are used to propagate desired variety. तो artificial method है जो कि desired variety को develop करने के लिए यूज़ होते हैं अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स. ये जो वेरियस मेथड्स हैं दे आर लाइक कटिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग एंड ऑल. सो लेट्स सी दिस कटिंग. कटिंग इज व्हाट? व्हेन दिस कटिंग आर द कट पीसेस ऑफ द रूट, स्टेम एंड लीव्स विच आर प्लांटेड इन नर्सरीज. हमने देखा है नर्सरीज में प्लांट के कटिंग्स यूज़ होते हैं एंड देन दीज कटिंग्स आर एबल टू डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स when placed in the moist soil. Yes, so it is a method in which a cutting from a plant is taken and planted. ये method में क्या होता है, plant का एक cutting लेते हैं
और उसको फिर सॉइल में प्लांट कर देते हैं और उससे ही इसमें रूट्स आते हैं एंड न्यू लीव्स आर कमिंग एंड देन डेवलप इनटू न्यू प्लांट. कटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेम और द ब्रांच ऑफ अ प्लांट. तो ये स्टेम का भी पार्ट हो सकता है, प्लांट का कोई भी पार्ट हो सकता है वेयर वी आर कटिंग द स्टेम और ब्रांचेस एंड देन इट डेवलप इनटू न्यू प्लांट. इट्स लाइक स्टेम कटिंग, root cutting or leaf cutting. Stem cutting, we had seen the examples like roses, bougainvillea, sugarcane, citrus. So these are the common method in these plants. Now root cutting, it is used in the propagation of lemon, orange, blackberry, raspberry. इसमें यहाँ पे क्या होता है, रूट की कटिंग्स, जहाँ पे रूट के पीसेस लेके और सॉइल में ग्रो करते हैं एंड देन इट डेवलप्स इनटू न्यू प्लांट्स. लीफ कटिंग फॉर एग्जांपल लाइक स्नेक प्लांट, बिगोनिया, देन ब्रायोफिलम. यहाँ पे लीव्स के कटिंग को लेकर एंड वो लीफ से ही न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं. सो वी कैन सी हियर यूजिंग प्लांट कटिंग टू रिप्रोड्यूस प्लांट फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्लांट. तो यहाँ पर प्लांट की कटिंग ली गई है, उसको कट करके और उसको सॉइल में पुट किया जा रहा है जिससे कि नया प्लांट ग्रो हो जाएगा. सो दिस इज़ द कटिंग मेथड of vegetative reproduction. Now let's see grafting. Here parts of two plants are joined in such a way that they grow as one plant. यहाँ पे दो प्लांट के पार्ट्स को इस तरह से जॉइन करते हैं कि वो एक ही प्लांट की तरह ग्रो होते हैं. In this method, part of the stem containing more than one bud, that is called as scion, is joined onto a rooted plant called as stalk, and that is called as grafting. यहाँ पर एक ऐसा स्टेम का पार्ट लेते हैं जिसमें एक से ज़्यादा बड हो, जिसे सियॉन बोलते हैं, और इसको जॉइन करते हैं किसके ऊपर, एक रूटेड प्लांट के ऊपर. एंड इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग. वेयर एज बडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज बड ग्राफ्टिंग इन विच ओनली वन बड इज जॉइंड ऑन द स्टॉक. तो यहाँ पे बड ग्राफ्टिंग में एक ही बड जॉइन होता है स्टॉक के साथ. फॉर एग्जाम्पल एप्पल, पेयर, रोज etc. So this is what grafting, and here in the picture grafting in rows. Here you can see joining a part, either stem part, stem grafting, bud part, bud grafting of the living plant to another, causing it to grow as a part of the second plant. So they are growing in such a manner that it will be the part of the second plant. It is useful in inducing the special trait or character of one plant into the another. For example, rose, then fruit yield plants like mango, guava, peaches, etc. So your types of grafting are two types, that is scion grafting or bud grafting. Now here let's see micropropagation or propagation by plant tissue culture. So what is tissue culture? Tissue culture क्या है? It is a method by which a small amount of plant tissue is carefully grown to give many plantlets. So ये method में plant tissue का small part लिया जाता है और उनको grow करके उनसे many plantlets बनाए जाते हैं. And this technique is useful in obtaining virus-free plants and disease-free plant. ये जो technique है ये यूज़फुल है किसमें, वायरस फ्री प्लांट्स को ऑब्टेन करने के लिए और डिजीज़ फ्री प्लांट्स को ऑब्टेन करने के लिए. दिस मेथड इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर क्विक मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट. कम समय में ज़्यादा प्लांटलेट्स तैयार करने के लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है. टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोपेग्यूल्स दिस टेक्निक इज़ यूज्ड. एंड फॉर दिस टेक्निक शूट एपिकल मेरिस्टेम इज़ यूज्ड एज एक्सप्लांट्स. प्लांट का एपिकल मेरिस्टेम शूट का यूज़ किया जाता है एक्सप्लांट के रूप में. माइक्रोप्रोपेग्यूल्स आर लार्ज इन नंबर. जो भी इनके माइक्रोप्रोपेग्यूल्स और प्लांटलेट्स जो प्रोड्यूस होते हैं बहुत ज़्यादा नंबर में, एंड दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल. Let's see here how this tissue culture technique takes place in the laboratory, where you can see many plantlets grown in from very small amount of plant tissues and in very less time. So tissue culture is the growth of tissues or the cells in an artificial medium separated from the organism. So in the artificial medium like agar-agar or broth
So these are the medium which may be in liquid or semi-solid or solid medium. So these mediums are used to grow these plant tissues, and these tissues will develop into the micropropagules and then into plantlets, and then these can be grown into soil later. So in this way tissue culture technique is used to produce maximum number of micropropagules. Now we had discussed about the vegetative reproduction. Now let's see the significance of vegetative reproduction. So it is easy and cheaper. Yes. Then formation of genetically similar plants. So vegetative propagation में genetically similar plants produce होंगे. Then improved variety multiplies for many generation. Yes. Then high yield variety by grafting method. Then rapid propagation, disease resistant variety by tissue culture technique. So economically this is very useful, this vegetative propagation economically very useful. And now in this way we had done with the asexual reproduction, and now in the next lecture we will continue with the sexual reproduction in flowering plants.